Students, we are on the second last question of this exercise, and the question is about the adjective phrases. Let's see what is the question. Replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. स्टूडेंट्स, हर एक स्टेटमेंट में हमें एक एडजेक्टिव फ्रेज दी गई है और उस एडजेक्टिव फ्रेजेस को हमने सिंगल एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है. चलिए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क. नाउ यहां पे स्टूडेंट्स मेड ऑफ सिल्क जो है वो हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो टर्बन को डिफाइन कर रही है. तो वी कैन आंसर दिस थिंग इन दिस वे दैट द ही वोर आ सिल्क टर्बन. यहां पे सिल्क जो है वो सिंगल एडजेक्टिव है. द सेकेंड इज ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड. So we can answer this in this way that the phrase here without a friend can be converted into one single adjective that is friendless. He is friendless. So students, हमने दो सेंटेंस में देखा कि कैसे हम एडजेक्टिव फ्रेजेस को सिंगल एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए हम अपनी तीसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. Nobody likes a person with a bad temper. In this statement, with bad temper is our adjective phrase, and we have to convert all of three words into one single adjective. Nobody like a bad tempered person. Exactly. Now here the fourth is it is of no use. Of no use here is an adjective phrase, so we can convert easily in this way that it is useless. Useless is a single adjective for of no use. The last is he is a man of sense. So we can easily convert this statement, or we can say man of sense, into sensible man. He is a sensible man. So students, you see that we have easily converted all of the adjective phrases into single adjective. I hope you understand the concept of converting adjective phrases into single adjective. Let's move to the last question of our exercise.